Hello everyone. Welcome to all of you in FFB Live Chemistry classes. आजकल ऑर्गेनिक कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी एक कंपाउंड से दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस तरह से बना सकते हैं, इस पे हमने वीडियो बनाया है। पिछले कई वीडियो इस तरह के थे, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने एसेंडिंग एंड डिसेंडिंग सीरीज के बारे में बताया था। और आज भी हम ऑर्गेनिक रिएक्शन ही बताएंगे, जिसमें मोस्टली जो क्वेश्चन आता है हाउ टू ऑब्टेन या कैसे प्राप्त करोगे, इस तरह के क्वेश्चन के लिए ये कन्वर्जन है। और कंपटीशन के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सारे रिएक्शंस एक जगह कलेक्ट करके बताए हैं। तो कॉपी पेन रख करके बैठ सकते हैं आप लोग, चाहे तो नोट कर सकते हैं, और वही नहीं तो वीडियो तो आपके पास रहेगा। इसे बार बार देखेंगे तो याद करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि देखते देखते ही याद हो जाएगा। और नहीं उसके अलावा नोट भी कर सकते हैं अपने पास। तो स्टार्ट करते हैं हम। ऑर्गेनिक कन्वर्जन पार्ट सेकंड है ये, पार्ट फर्स्ट पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं। तो आज का जो सबसे पहला रिएक्शन है वो कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल टू अदर कंपाउंड्स, यानी एल्कोहल को दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में किस तरह से बदल सकते हैं। फर्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ एथिल एल्कोहल टू एथिलीन और एथीन। दिस इज द एथिल एल्कोहल C2H5OH। रिएक्शन कराते हैं इसका कंसंट्रेट H2SO4 से एक्सेस में। जब टेम्परेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो एथिलीन बनेगा। इससे कम टेम्परेचर रखने पे दूसरा कंपाउंड बन जाएगा, इसलिए टेम्परेचर को 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन करके हम एथिलीन मिल जाएगी। नाउ कन्वर्जन ऑफ एथिल एल्कोहल टू क्लोरोफॉर्म। इसके लिए क्या करते हैं, दिस इज दी ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 के साथ एथिल एल्कोहल को हीट करते हैं तो क्लोरोफॉर्म बनता है। उसके बाद अगला कन्वर्जन वही है। ये पहला रिएक्शन वो था, दूसरा ये है। एथिल एल्कोहल को क्लोरीन और NaOH के साथ हीट करेंगे तो भी हमें क्लोरोफॉर्म मिलेगा। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ एथिल एल्कोहल टू मेथिल एमीन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एथिल एल्कोहल का रिएक्शन एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट से कराते हैं तो ऑक्सीडेशन होता है और एसेटल्डिहाइड बनता है। एसेटल्डिहाइड का फर्दर इन्हीं रिएजेंट के प्रेजेंट में ऑक्सीडेशन होने पे एसिटिक एसिड बनता है। एसिटिक एसिड का रिएक्शन हाइड्रोजोइक अम्ल और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से कराने पे मेथिल एमीन बनता है। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ एथिल एल्कोहल टू एथिलेमाइन। Now ethyl alcohol reacts with the phosphorus tribromide. It gives ethyl bromide. Ethyl bromide reacts with ammonia to gives ethyl amine. Now conversion of ethyl alcohol to acetic anhydride. Now ethyl alcohol reacts with acidified sodium dichromate. Then oxidation takes place. It gives acetaldehyde, which on oxidation gives acetic acid. Acetic acid reacts with phosphorus pentaoxide. When heated, it gives acetic anhydride. Now conversion of ethyl alcohol to acetic anhydride. ये हो गया। उसके बाद है conversion of 2-propanol, that is isopropyl alcohol, to 1-propanol. This is N-propyl alcohol. तो isopropyl alcohol या N-propanol यानी CHOH उस कार्बन से जुड़ा है जिससे 2 R ग्रुप जुड़े हैं। This is the isopropyl alcohol. When reacts with aluminum oxide at 350 degrees centigrade, it gives propene, and propene reacts with HBr in presence of peroxide. It forms propyl bromide, and propyl bromide reacts with KOH. It gives
एक्वस KOH से रिएक्शन होता है तो 1 प्रोपेनल बनता है। नाउ कन्वर्जन ऑफ ग्लिसरॉल टू आइसोप्रोपिल आयोडाइड। This is the glycerol, CH2OH, CHOH, and CH2OH. Propane 1,2,3 trihydroxy all. तो ये HI से इसका this is not trihydroxy, propane 1,2,3 triol. Sorry. तो ग्लिसरॉल का जो रिएक्शन होता है एक्सेस ऑफ HI से हाइड्रोजन आयोडाइड हीट करते हैं तो आइसोप्रोपिल आयोडाइड बनता है। नाउ कन्वर्जन ऑफ ग्लिसरॉल टू एलाइल आयोडाइड, इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज हियर। ग्लिसरॉल रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड, this is phosphorus iodide, sorry. This is glycerol reacts with phosphorus iodide. When heated, it gives एलाइल आयोडाइड। एलाइल ग्रुप से आयोडीन जुड़ रहा है तो एलाइल आयोडाइड बनता है। नाउ कन्वर्जन ऑफ ग्लिसरॉल टू फॉर्मिक एसिड। दिस इज ग्लिसरॉल reacts with oxalic acid at 100 to 110 degrees centigrade. It gives formic acid. Conversion of glycerol to allyl alcohol. So glycerol reacts with oxalic acid at 260 degrees centigrade. It gives allyl alcohol. Allyl group है ये और इससे OH अटैच है। उसके बाद आ जाते हैं कन्वर्जन ऑफ एथिल अल्कोहल टू एसीटोन। ये ऑक्सीडेशन होगा, पहले एथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एसिटिक एसिड बनता है। नाउ एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू गिव सोडियम एसीटेट। इसका ये रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट है। तो कैल्शियम एसीटेट बनता है जिसको हीट करने पे हमें एसीटोन मिलेगा। Now conversion of isopropyl alcohol into acetone. This is isopropyl alcohol. When heated with copper at 300 degrees centigrade, it gives acetone and H2. Now conversion of aldehydes and ketones to other compounds. अभी तक था अल्कोहल को अदर कंपाउंड्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अब ये conversion of aldehydes and ketone to other compounds. Now conversion of formaldehyde to acetaldehyde. Formaldehyde, when oxidized with acetified sodium dichromate, it gives formic acid. Formic acid reacts with calcium hydroxide, it gives calcium formate. Calcium formate reacts with calcium acetate. When heated, it gives acetaldehyde. Now conversion of formaldehyde to metaformaldehyde. Metaformaldehyde. This is formaldehyde. When treated with concentrate H2SO4, distillation takes place. It gives metaformaldehyde. Now conversion of formaldehyde to hexamethylene tetramine. Now this is important reaction. Formaldehyde reacts with ammonia. It gives hexamethylene tetramine. This is known as urotropin and 6H2O. Now conversion of acetone, conversion of acetaldehyde to acetone. Acetaldehyde reacts with or acetified, oxidized with acetified sodium dichromate. It gives acetic acid. Acetic acid reacts with calcium hydroxide. It gives calcium acetate. Calcium acetate, when heated, it gives acetone. Now conversion of acetaldehyde to methylamine. Acetaldehyde oxidized by acidified sodium dichromate. It gives acetic acid. Acidic acid reacts with hydrozoic acid and concentrate sulfuric acid. It gives methylamine.
Now conversion of propionaldehyde to propionic anhydride. Now propionaldehyde CH2 बढ़ जाएगा तो ये propionaldehyde हो जाएगा. Oxidized by acidified potassium dichromate, it forms propionic acid. This reacts with phosphorus pentaoxide. When heated, it gives propionic anhydride. Now conversion of acetaldehyde to ethylene. Acetaldehyde रिडक्शन कराते हैं एसिटाल्डिहाइड का H2 और पैलेडियम के प्रेजेंस में. तो एसिटाल्डिहाइड reduced to give ethyl alcohol, and this reacts with alumina at 350 degrees centigrade gives ethylene. Now conversion of acid aldehyde to 2-hydroxy 3-butanoic acid. This is acetaldehyde vapors reacts with formaldehyde. यहाँ क्या है? Conversion of acetaldehyde to 2-hydroxy 3-butanoic acid. तो acetaldehyde और formaldehyde, acetaldehyde and formaldehyde reacts in presence of catalyst lithium phosphate. कैटलिस्ट होगा तो ये क्या कन्वर्ट हो जाता है? एक्रेल्डिहाइड यानी अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया. Now this unsaturated acraldehyde reacts with hydrogen cyanide. It gives this compound, which on hydrolysis, this is unstable compound, which on acid hydrolysis gives 2-hydroxy 3-butanoic acid. Now conversion of acetaldehyde to 2-phenylpropane to all. Acetaldehyde oxidized by acidified sodium dichromate, it gives acetic acid. It reacts with calcium hydroxide, it gives calcium acetate. When calcium acetate is heated, it gives acetone. Acetone reacts with Grignard reagent phenyl magnesium bromide. It gives this unstable compound, which on hydrolysis gives final product 2-phenylpropane to all. Now conversion of acetone to iodoform. Acetone, when reacts with iodine in presence of aqueous KOH, when it is heated, it forms iodoform CHI3. Conversion of acetone to acetamide. This is acetone reacts with acidified sodium dichromate. When it oxidizes. Acetone oxidized to gives acetic acid. Now this acetic acid reacts with ammonia. It gives ammonium acetate. Ammonium acetate, when heated, it gives acetamide. Now conversion of carboxylic acid to other compounds. Conversion of formic acid. Conversion of carboxylic acid to other compounds. First, conversion of formic acid to formaldehyde. This is formic acid. Reacts with calcium hydroxide. It forms calcium formate. This, when heated, calcium formate, when heated, it gives formaldehyde. Now conversion of acetic acid to ethane. Acetic acid reacts with KOH, it forms potassium acetate, and potassium acetate on electrolysis in aqueous solution, it gives ethane. Now conversion of acetic acid to acetyl chloride. Acetic acid reacts with phosphorus trichloride, it gives acetyl chloride. Now conversion of acetic acid to ethylamine. This is acetic acid. Reducted in lithium aluminum hydride in presence of ether, it forms ethyl alcohol. Ethyl alcohol reacts with phosphorus tribromide, it forms ethyl bromide. Ethyl bromide reacts with alcoholic ammonia, and when heated, it gives ethyl amine. Or another type of this reaction, conversion, acetic acid reacts with ammonia, it forms ammonium acetate. Ammonium acetate, when heated, it gives acetamide or ethanamide. Ethanamide reacts with sodium and ethyl alcohol, or in lithium aluminum hydride in ether, it gives ethyl amine.
Now conversion of acetic acid to acetamide. Acetic acid when reacts with ammonia, it gives ammonium acetate. Ammonium acetate when heated, it gives acetamide. Now conversion of acetic acid to methyl alcohol. Acetic acid reacts with ammonia, form ammonium acetate, it gives acetamide on heating. Now acetamide reacts with bromine and KOH, and when heated it gives methylamine. Methylamine reacts with nitrous acid in presence of water. NaNO2 और HCl के रिएक्शन से नाइट्रस एसिड बनता है. Now it converted into methyl alcohol. Now conversion of acetic acid to acetaldehyde. Acetic acid का रिडक्शन कराते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड in presence of ether, तो ये is converted into ethyl alcohol. Ethyl alcohol reacts heated with copper at 300 degrees centigrade. It gives acetaldehyde. Now conversion of acetic acid to acetone. Acetic acid reacts with calcium hydroxide. It forms calcium acetate, and calcium acetate when heated it gives acetone. Now conversion of acetic acid to methyl cyanide. Acetic acid reacts with ammonia. It gives ammonium acetate. When heated it gives acetamide or ethanamide. This reacts, this heated with phosphorus pentoxide, it gives methyl cyanide. Now conversion of acetic acid to methylamine. Acetic acid, hydrozoic acid reacts with hydrozoic acid in presence of concentrate sulfuric acid. It forms methylamine, and acetic acid reacts with only ammonia. It gives ammonium acetate, and this ammonium acetate when heated it gives acetamide. Acetamide reacts with bromine and KOH. When heated it gives ethylamine. तो दो प्रोसेस, ये आसान प्रोसेस, एक ही स्टेप में मेथिलामीन बन रहा है एसिटिक एसिड से, जबकि इसमें क्या हो रहा है कि पहले अमोनिया के साथ हीट करते हैं तो अमोनियम एसीटेट बनता है, उसको हीट करते हैं तो एमाइड बनता है, एमाइड को Br2KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मेथिलामीन बनता है. Now conversion of propionic acid to ethylamine. This is the propionic acid. अमोनिया से रिएक्शन होगा तो पहले अमोनियम एसीटेट को हीट करेंगे तो एथिलएमाइड, प्रोपेनमाइड बनेगा. यहाँ प्रोपेनमाइड का रिएक्शन Br2 + KOH से कराने पे हीट करेंगे इन दोनों के साथ तो बनेगा एथिलएमीन. और इधर प्रोपियोनिक एसिड directly reacts with hydrozoic acid in presence of concentrated sulfuric acid. It gives ethylamine. तो ये एक लंबा प्रोसेस है जबकि ये डायरेक्ट प्रोसेस है. Now conversion of propionic acid to N-butylamine. This is propionic acid reacts with lithium aluminum hydride in presence of ether. It forms N-propyl alcohol. Now this reacts with phosphorus tribromide. It gives N-propyl bromide. N-propyl bromide reacts with potassium cyanide, alcoholic potassium cyanide. It gives propyl cyanide. Now this reacts or reduce in presence of sodium and ethyl alcohol or in presence of lithium aluminum hydride and ether. It forms N-butylamine. Now conversion of oxalic acid to formic acid. This is oxalic acid reacts with glycerol at 100 to 110 degrees centigrade. It forms formic acid and carbon dioxide. Now conversion of formic acid to oxalic acid. These are very important सारे reaction है ये सब. सामने के तुम्हारे दिया भी हुआ है कि बोर्ड में कब कब आए हैं. Now formic acid reacts with sodium. It forms sodium formate. This when heated at 360 degrees centigrade, it forms sodium oxalate. This reacts with water to form oxalic acid. So now formic acid converted into oxalic acid.
Now conversion of formic acid to acetic acid. This is formic acid reacts with calcium hydroxide to form calcium formate. Calcium formate reacts with calcium acetate to give acetaldehyde. Acetaldehyde when oxidized to give acetic acid. Now conversion of acid derivative to other compounds. First is conversion of acetyl chloride to methylamine. This is acetyl chloride reacts with ammonia to form acetamide. This acetamide reacts with bromine and KOH. When heated, it gives methylamine. दूसरे तरह से किस तरह से एसिटिल क्लोराइड का रिएक्शन वाटर से कराते हैं, हीट करते हैं इसके साथ, वाटर में हीट करेंगे तो एसिटिक एसिड बनेगा. नाउ एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजोइक एसिड in presence of concentrated sulfuric acid, it gives methylamine. Now conversion of acetyl chloride to acetamide. Acetyl chloride when reacts with ammonia, it gives acetamide. Conversion of acetyl chloride to acetic acid. Acetyl chloride, when heated with water, it gives acetic acid. Conversion of acetyl chloride to acetic anhydride. Sodium, this is the sodium acetate. Is when acetyl chloride heated with sodium acetate, it gives acetic anhydride. Now conversion of ethyl acetate to acetamide. This is ethyl acetate when heated, when reacts with concentrate ammonia, it forms acetamide. Now conversion of acetamide to methyl cyanide. Now acetamide heated with phosphorus pentaoxide, it gives methyl cyanide. Now conversion of acetamide to methylamine. Acetamide when heated with bromine and KOH, it forms methylamine. Conversion of acetamide to ethylamine. So acetamide reacts with sodium या रिडक्शन कराते हैं इसका सोडियम और एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है एथिल एमीन में. Now conversion of amines to other compounds. Conversion of ethylamine to acetone. This is the ethylamine C2H5NH2 reacts with nitrous acid. For this NaNO2 and HCl is used. Now ethylamine converts into ethyl alcohol. Ethyl alcohol now reacts with acidified sodium dichromate. Then it is oxidized and form acetaldehyde. This acetaldehyde, when oxidized in presence of these catalysts, it forms acetic acid. Acetic acid reacts with calcium hydroxide to form calcium acetate, which on heating give acetone. Heat करते हैं इसको तो ये acetone देता है. Now some other important conversions. First is conversion of potassium cyanate to urea. This is potassium cyanate 2KOCN reacts with ammonium sulfate. Vaporization कराते हैं इसका, heat करते हैं तो ये यूरिया में convert हो जाता है 2NH2CONH2. This is known as urea and this plus K2SO4. This is important conversion. Conversion of potassium cyanide to urea. Now conversion of methyl cyanide to acetic acid. Methyl acetate, methyl cyanide reacts with water and HCl, it forms acetic acid. Conversion of methyl cyanide to acetamide. Methyl cyanide reacts with hydrogen peroxide alkali solution में और वाटर प्रेजेंट होगा इसमें, तब क्या बनेगा acetamide. Now conversion of monocarboxylic acid to allyl halides. Monocarboxylic acid reacts with sodium with silver salt. This is तो ये बनाता है RC, सिल्वर के साथ, सिल्वर आयन के साथ रिएक्शन होता है.
तो ये RCOOH यानी H हटा करके Ag यहाँ जुड़ जाता है। नाउ दिस साल्ट रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड में ब्रोमीन को डिसॉल्व करके इससे रिएक्शन कराते हैं तो ब्रोमाइड बनता है, एल्किल ब्रोमाइड, और कार्बन डाइऑक्साइड AgBr. दिस इज द एल्किल हैलाइड. Now conversion of glucose to saccharic acid. Saccharic acid is the glucosaccharic acid. This is the glucose, 5 OH present in glucose and 1 CHO. When oxidized by HNO3, it forms saccharic acid. यहाँ पे COOH ऊपर नीचे हो जाता है. This is the saccharic acid. Conversion of glucose to glucosazone. Conversion of glucose to glucosazone. This is important reaction of glucose. Conversion of glucose to glucosazone. This is glucose. को इस तरह से लिख सकते हैं CHO, यहाँ पे CH3 कर दिया हमने, CHOH3, और इसको एक अलग लिख दिया रिएक्शन को समझने के लिए. नाउ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज. अब इसका रिएक्शन फेनिल हाइड्रोजीन से होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है, इस तरह का कंपाउंड बनता है. ये यहाँ CH डबल बॉन्ड या CO डबल बॉन्ड होता है तो CH डबल बॉन्ड NHC6H5 और इस C के साथ डबल बॉन्ड NNHC6H5 जुड़ जाता है और CHOH होल थ्राइस CH2OH एज सेम होता है. प्लस क्या बनता है, एनिलीन C6H5NH2, वाटर एंड अमोनिया. तो दिस कंपाउंड इज नोन एज ग्लूकोसाजोन. Now conversion of aliphatic compounds into aromatic compounds. This conversion is termed as aromatization. Now aromatization of alkanes, all the N-alkanes or all the normal alkanes containing 6 or more carbon atoms give aromatic compounds on heating at high temperature at 460 to 500 degrees centigrade in presence of catalyst chromic oxide. Now example N-hexane जिसमें कि 6 कार्बन है. When heated with the chromic oxide at 460 to 500 degrees centigrade, it forms aromatic compound benzene and hydrogen. Now N-heptane, when heated, it forms toluene and H2. 4H2. These reactions give cyclic compound because of dehydrogenation. Now cyclic polymerization of alkynes. Acetylene when heated in red hot tube, it forms benzene. 3 molecules of acetylene when heated in red hot tube, it gives benzene. And acetylene and methyl acetylene when heated, it forms toluene. Now methyl acetylene plus acetylene when heated, it forms metaxylene, and methyl acetylene is strongly heated, it forms mesitylene. In presence of concentrate H2SO4, distillation of acetone yields mesitylene. Acetone in presence of concentrate H2SO4, when distilled, it gives mesitylene and H2O. Mesitylene is that benzene ring में 3 CH3 group इस तरह present होंगे तो वो क्या कहलाएगा, mesitylene. Now conversion of aromatic compounds into aliphatic compounds. Aromatic compounds into aliphatic compounds. This is known as dearomatization. Now benzene can be converted to aliphatic compounds in following manner. Benzene when reacted with hydrogen in presence of nickel, it gives cyclohexane.
And cyclohexane, when oxidized by potassium permanganate, it gives this compound dicarboxylic acid, and this heated with soda lime, it gives N-butane. Now, second, salicylic acid gives aliphatic compounds as per following reaction. This is salicylic acid. When reducted, it forms this compound. This is two types of, इसमें यहाँ double bond transfer हो जाता है, delocalization हो रहा है. Now, this compound, when hydrolyzed, it gives palmitic acid, and this palmitic acid reacts with soda lime. When heated, it forms N-pentane. Now, synthesis reaction beginning with elements. छोटा कर लिया जाए. Synthesis reactions beginning with elements. In the synthesis of organic compound from its constituents, from first, methane or acetylene is synthesized using reactions first or second. Then the desired product is obtained using proper reaction. For example, synthesis of formic acid. तो एलिमेंट से किस तरह से स्टार्ट करेंगे? कार्बन हाइड्रोजन का रिएक्शन कराएंगे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एट हाई टेम्परेचर, तो ये देगा मीथेन. Now methane reacts with chlorine in presence of sunlight, it forms chloromethane. Chloromethane reacts with aqueous NaOH, it forms methyl alcohol. Methyl alcohol, when oxidized, it forms formaldehyde. Formaldehyde, when oxidized, is formic acid. So from element, synthesis reaction है ये from beginning. Element से start करके हम एक important compound बना रहे हैं, बल्कि 3-4 important compound बन रहा है. Now synthesis of acetic acid, carbon and hydrogen reacts by your electric arc at 1200 degrees centigrade. It forms acetylene. Now acetylene reacts with mercuric sulfate and sulfuric acid की presence में हाइड्रोलिसिस होती है एसिटिलीन की, तो बनता है acetaldehyde. Now this on oxidation gives acetic acid. So this is the important reaction. Now important interconversions of some aromatic compounds. अब aromatic compounds पे आ गए हम. Conversion of benzene into other compounds. Conversion of benzene to toluene, simple reaction. मेथिल क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे तो टॉलुइन बनेगा. Conversion of benzene to benzaldehyde. Benzene reacts with carbon monoxide and HCl vapors. In presence of anhydrous aluminum chloride, it forms benzaldehyde. Now benzene reacts with methyl chloride. In presence of anhydrous aluminum chloride, it forms toluene. Toluene, when reacts with carbonyl chloride in carbon tetrachloride and H2O, it gives benzaldehyde. Now conversion of benzene to acetophenone. Benzene reacts with acetyl chloride. In presence of anhydrous aluminum chloride, it forms acetophenone. Now conversion of benzene to phenol. Important reaction. Benzene से start हो रहा है. Benzene reacts with concentrated sulfuric acid. When heated, it forms benzene sulfonic acid. This benzene sulfonic acid reacts with NaOH. It forms sodium benzene sulfonate. This sodium benzene sulfonate reacts with NaOH. Solid NaOH से reaction कराते हैं, heat करते हैं इसके साथ में. Then it gives sodium phenoxide. ONA यहाँ लग जाएगा. Which on hydrolysis, acid hydrolysis हो रही है, it gives phenol. दूसरे प्रोसेस में बेंजीन reacts with HCl and CuCl2. इन दोनों की प्रेजेंस में एयर से रिएक्शन करता है फिनॉल, तो बनाता है क्लोरोबेंजीन. It's as a reactant. Benzene reacts all these reactant to form chlorobenzene. This, when treated with NaOH, aqueous NaOH at 300 degrees centigrade and 200 atmospheric pressure, it forms sodium phenoxide, which on hydrolysis gives phenol.
Now conversion of benzene to benzoic acid. This is benzene को benzoic acid में convert करना है, तो 2-3 प्रोसेस है इसमें. Benzene reacts with methyl chloride and anhydrous aluminum chloride. It forms toluene. एक CH3 यहाँ जुड़ गया. Now toluene reacts with alkaline KMnO4 in presence of sulfuric acid. It forms benzoic acid. दूसरे सिस्टम थे, दूसरे तरीके से बेंजीन रिएक्ट्स विद COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड एंड एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड. इट फॉर्म बेंजोइल क्लोराइड. COCl जुड़ गया, इसको हीट करते हैं इसके सॉल्यूशन को वाटर के साथ, तो बेंजोइक एसिड बनता है. तीसरे तरीके में है बेंजोइक सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का प्रोसेस. आगे देखा कहाँ से स्टार्ट करते हैं. इस बेंजीन सल्फोन, पहले बेंजीन को बेंजीन सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करके. दिस बेंजीन सल्फोनिक एसिड व्हेन ट्रीटेड विद KOH it forms sodium salt of benzene sulfonic acid, and this reacts with solid potassium cyanide to form cyanobenzene, and cyanobenzene when heated in aqueous solution it gives benzoic acid. Now conversion of benzene to nitrobenzene. C6H6 यानी बेंजीन reacts with HNO2, ये नाइट्रेशन रिएक्शन कहलाता है. HNO3H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो बनेगा नाइट्रोबेंजीन. Now conversion of benzene to aniline. Aniline reacts with concentrate sulfuric acid and nitric acid at 60 degree centigrade. Same reaction. First it converted into nitrobenzene. Now nitrobenzene is reduced by SN and HCl. It forms aniline. This is important reaction. Both are very important reaction. उसके बाद है conversion of benzene to benzyl alcohol. Conversion of benzene to benzyl alcohol. Benzene reacts with methyl chloride in presence of anhydrous aluminum chloride. It forms toluene. Now toluene reacts with carbonyl chloride in presence of carbon tetrachloride and H2O. It forms benzaldehyde. Now benzaldehyde is reduced by sodium mercury amalgam in presence of H2O. It forms benzyl alcohol. Now conversion of benzene to para-nitrobenzaldehyde. Benzene reacts with methyl chloride in presence of anhydrous aluminum chloride. It forms toluene. Toluene reacts with concentrate HNO3 and concentrate H2SO4. It forms ortho and para-nitrotoluene. Now this reacts with chromic oxide and acetic acid and or acetic anhydride. It forms para-nitrobenzylidene. This is para-nitrobenzylidene, which on hydrolysis, acid hydrolysis कराने पे ये देता है 4-nitrobenzaldehyde. Now conversion of benzene to para-nitrotoluene. बेंजीन उसी तरह से पहले इससे टॉलुइन बनाते हैं. टॉलुइन का रिएक्शन कराया नाइट्रेशन कराने पे आर्थो पैरा नाइट्रो टॉलुइन बनता है. नाउ कन्वर्जन ऑफ पैरा नाइट्रोटॉलुइन, तो इसमें दोनों ही प्रोडक्ट बनते हैं. मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? पैरा. नाउ कन्वर्जन ऑफ बेंजीन टू मेटा ब्रोमो आयोडोबेंजीन. Benzene, when nitrated, it gives nitrobenzene. Nitrobenzene reacts with bromine in presence of iron. It forms M-bromo-nitrobenzene. यहाँ ब्रोमो ग्रुप लग गया. Now M-bromo-nitrobenzene is reducted by SN and HCl. It forms meta-bromo-aniline. Meta-bromo-aniline reacts with nitrous acid. In नाइट्रस एसिड के लिए NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये
मेटा ब्रोमोबेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कंपाउंड बनता है. दिस व्हेन रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड एंड हीटेड इट फॉर्म्स मेटा ब्रोमो आयोडोबेंजीन. ओवरऑल रिएक्शन is this. Now conversion of toluene to other compounds. Conversion of toluene to benzaldehyde. This is toluene. Reacts with chromyl chloride in presence of carbon tetrachloride and water. It forms benzaldehyde. Now conversion of toluene to benzoic acid. तो बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके भी हमको बेंजोइक एसिड मिल जाएगा. उसके अलावा टॉलुइन को हम एल्कलाइन KMnO4 और H2SO4 से ट्रीट करेंगे तो बेंजोइक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ कन्वर्जन ऑफ टॉलुइन टू बेंजीन. बेंजीन when reacts with alkaline KMnO4 and H2SO4 it forms benzoic acid, and benzoic acid reacts with soda lime NaOH and CaO. When heated it forms benzene. Now conversion of toluene to 2,4,6 trinitrotoluene TNT. very important reaction है ये. Conversion of toluene to 2,4,6 trinitrotoluene. In short, it is known as TNT. Toluene reacts with fuming HNO3 and H2SO4. It forms TNT. इसमें क्या है, मेथिल ग्रुप के साथ 3 नाइट्रो ग्रुप बेंजीन में जुड़ गए. दिस इज ट्राइनाइट्रोटोलुइन. नाउ कन्वर्जन ऑफ टोलुइन टू benzotrichloride. Toluene reacts with chlorine in presence of sunlight. It forms benzotrichloride and HCl. Now conversion of halobenzene to other compounds. Conversion of chlorobenzene to DDT. This is important reaction. Conversion of chlorobenzene to DDT. This is chlorobenzene reacts with chloral. Chloral कैसे बनता है? एसेटल्डिहाइड और ब्लीचिंग पाउडर के रिएक्शन से क्लोरल बनता है. तो क्लोरल का रिएक्शन कराते हैं क्लोरोबेंजीन से. In presence of concentrate H2SO4 when heated it forms toluene. Toluene, not toluene, ये कंपाउंड बनता है. इन दोनों को कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करने पे ये कंपाउंड बनता है जिसको हम DDT कहते हैं. 2 बेंजीन रिंग इस तरह से CH और इसके थ्रू जुड़ जाते हैं. तीनों Cl इस कार्बन के साथ अटैच है और एक Cl इसके साथ. दिस इज पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन. पैरा डैश, एक पैरा हो गई, पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल trichloroethane. This is known as DDT. Now conversion of bromobenzene to metanitrobenzoic acid. Conversion of bromobenzene to metanitrobenzoic acid. This is bromobenzene. Br लगा है यहाँ. रिएक्शन कराते हैं कॉपर साइनाइड और प्रीडीन की प्रेजेंस में एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड. इट फॉर्म्स फेनिल साइनाइड. फेनिल साइनाइड रिएक्ट्स विद H2SO4 एंड वाटर. इट गिव्स बेंजोइक एसिड. नाउ बेंजोइक एसिड रिएक्ट्स विद कंसंट्रेट HNO3 एंड कंसंट्रेट H2SO4. इन दोनों के प्रेजेंस में बेंजोइक एसिड बदल जाता है मेटानाइट्रोबेंजोइक एसिड में. Now conversion of chlorobenzene to aniline. Chlorobenzene when reacts with sodium hydrogen, this is the catalyst. It forms aniline, phosphorus and toluene की presence में होता है ये. Conversion of nitrobenzene to other compounds. Conversion of nitrobenzene to phenol. पहला है इसमें conversion of nitrobenzene to phenol.
नाइट्रोबेंजीन when reacts with SnHCl, तो रिडक्शन होता है तो ये एनिलीन में कन्वर्ट हो गया. Now nitrobenzene when reacted with SnHCl it forms aniline. Aniline is react with sodium nitrite and HCl. This is nitrous acid. At 5 degrees centigrade it forms diazonium salt, and this on hydrolysis or heating gives phenol. Now conversion of nitrobenzene to aniline. Nitrobenzene when reacts with Sn and concentrate HCl, reduction takes place and forms aniline. Conversion of nitrobenzene to phenyl hydroxylamine. Nitrobenzene reacts with Zn, NH4Cl. It forms nitrosobenzene. This is intermediate. When this reducted, it gives phenyl hydroxylamine. Now conversion of nitrobenzene to benzamide. Nitrobenzene reducted with Sn and HCl, it forms aniline. Aniline reacts with nitrous acid, NaNO2 plus HCl at 5 degrees centigrade. It forms benzene diazonium chloride. Benzene diazonium chloride reacts reacts with KCN in presence of copper cyanide. It forms phenyl cyanide. Now phenyl cyanide reacts with alcoholic hydrogen peroxide and water. It forms benzamide. This is the complete reaction. Now conversion of nitrobenzene to chlorobenzene. नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन होता है SnCl HCl की प्रेजेंस में. दिस कन्वर्ट इनटू एनिलीन. एनिलीन रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड. It gives benzene diazonium chloride, and this reacts with HCl in presence of CuCl. It forms chlorobenzene. Now conversion of aniline to other compounds. Conversion of aniline to phenol. Important reaction. Aniline reacts with nitrous acid. NaNO2 plus HCl के reaction से nitrous acid बनता है. At 5 degrees centigrade, it forms benzene diazonium chloride, which on heating with water, it forms phenol. Now conversion of aniline to benzoic acid. Now aniline reacts with nitrous acid. At 5 degrees centigrade, it forms diazonium chloride, benzene diazonium chloride. This react with KCN in presence of CuCN and potassium cyanide in presence of copper cyanide. It forms phenyl cyanide, which on hydrolysis gives benzoic acid. Now conversion of aniline to chlorobenzene. Aniline reacts with nitrous acid. यहाँ से nitrous acid बनता है. At 5 degrees centigrade, it forms benzene diazonium chloride, which reacts with HCl in presence of CuCl. It forms chlorobenzene. Now conversion of aniline to benzaldehyde. Aniline reacts with NaNO2 plus HCl, which forms nitrous acid. At 5 degrees centigrade, it forms benzene diazonium chloride, which reacts with potassium cyanide in presence of copper cyanide. It forms phenyl cyanide. Phenyl cyanide reducted with SnCl2 and HCl and hydrolyzed to give benzaldehyde. Now conversion of 4-nitroaniline to 1,2,3-tribromobenzene. Conversion of 4-nitroaniline to 1,2,3-tribromobenzene. This is 4-nitroaniline reacts with bromine in presence of acetic acid. It forms this 2,6-dibromonitro-aniline. It reacts with sodium nitrite and sulfuric acid. It forms this intermediate compounds which reacts with HBr in presence of cupric bromide. It forms tribromonitrobenzene, and this reacts with Sn and HCl. It forms 3,4,5-tribromoaniline. And this 3,4,5-tribromoaniline reacts with nitrous acid. It forms diazonium ka bromine bromo derivatives.
This reacts with phosphoric acid to form 1,2,3 tribromobenzene. So overall reaction is this. Now conversion of phenol to other compounds. Conversion of phenol to benzene. Phenol reacts with zinc dust gives benzene. Important reaction. Conversion of phenol to acetophenol. Phenol reacts with zinc dust to give benzene. Benzene reacts with acetyl chloride in presence of anhydrous aluminum chloride. It gives acetophenol. COCH3 group लगा होगा benzene ring में, तो this is acetophenol. Conversion of phenol to picric acid, very important reaction. Phenol reacts with concentrate sulfuric acid. It forms ortho or paraphenol sulfonic acid. यानी बेंजीन रिंग में OH और SO3H ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे लगे होंगे या दोनों पे होंगे. मेन प्रोडक्ट पैरा कंपाउंड होगा. This reacts with concentrate HNO3 to gives 2,4,6-dinitrophenol, which is known as picric acid. Now conversion of phenol to aniline. Phenol reacts with ammonia. In presence of zinc chloride at 300 degrees centigrade, it forms aniline and H2O. Conversion of phenol to salicylic acid. Phenol reacts with carbon tetrachloride and NaOH. It forms salicylic acid. आर्थो एंड पैरा सैलिसिलिक एसिड है. इसमें पैरा जो है ये मेन प्रोडक्ट होगा. नाउ कन्वर्जन ऑफ बेंजल्डिहाइड टू सिनेमिक एसिड. दिस इज बेंजल्डिहाइड reacts with acetic anhydride in presence of sodium acetate. When heated, it forms cinnamic acid and acetic acid. Conversion of benzoic acid to other compounds. Conversion of benzoic acid to benzene. Benzoic acid, when reacts with soda lime, when heated with soda lime, it gives benzene. Conversion of benzoic acid to toluene. Benzoic acid first converted into benzene, then reacts with methyl chloride in presence of anhydrous aluminum chloride. It forms toluene. Now conversion of benzoic acid to phenyl cyanide. Benzoic acid reacts with ammonia to form ammonium benzoate. When heated, it gives benzamide. And benzamide heated with phosphorus pentoxide, it forms phenyl cyanide. तो दोनों ही conversion है ये. Benzoic acid से benzamide और benzoic acid से phenyl cyanide. Now conversion of benzoic acid to benzaldehyde. This is benzoic acid reacts with phosphorus pentachloride to form benzoyl chloride. When reducted with hydrogen in presence of palladium and barium sulfate in xylene, it forms benzaldehyde. Now conversion of benzoic acid to benzyl alcohol. Benzyl alcohol. This is benzoic acid reacts with phosphorus pentachloride. It forms benzoyl chloride. When reducted with hydrogen in presence of palladium and barium sulfate in xylene, it forms benzaldehyde. Now benzaldehyde reacts with sodium mercury amalgam in presence of water. It forms benzyl alcohol. Now conversion of benzoic acid to aniline. Benzoic acid reacts with ammonia. It forms ammonium benzoate. When heated, it forms benzamide. Benzamide is heated with bromine and KOH. It forms aniline. Now conversion of ethyl benzene to other compounds. Conversion of ethyl benzene to 1-bromo 1-phenyl ethane. This is ethyl benzene or toluene. This is ethyl benzene. When reacts with N-bromosuccinamate, this is N-bromosuccinamate, reacts with CCl4 in light, it forms 1-bromo-phenyl ethane and succinamide or
Ethyl benzene reacts with bromine, it forms this compound. Conversion of ethyl benzene to benzene. Ethyl, this is ethyl benzene, reacts with the alkaline HKMNO4, it forms benzoic acid. This benzoic acid, when heated with soda lime, it gives a benzene. Now conversion of ethyl benzene to 2-phenylpropionic acid. This is ethyl benzene reacts with bromine in presence of light or NBS and light and CCl4. It forms 1-bromo-1-phenyl. This reacts with potassium cyanide to give this compound, which on hydrolysis gives 2-phenylpropionic acid. Okay. तो इस तरह से ये सारे जो जितने कन्वर्जन यहाँ कलेक्ट किए थे वो तुम्हारे कंप्लीट हुए और अगले वीडियो में इसी तरह से हम और जो भी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस होंगे या इम्पोर्टेंट रिएक्शन में जो रिएजेंट यूज होंगे उनके बारे में बताएंगे अगले वीडियो में। तो ये कंप्लीशन सीरीज के वीडियोस हैं जिनको उम्मीद करती हूँ तुम लोग देख करके इनका फायदा उठाने की कोशिश करोगे।